but we need to warm up with our experience and with our knowledge. So what you can do, you can just rub your hands like this for 2 minutes maybe, and then you feel comfortable. But the most important thing is for the trainer to be that you need to be very comfortable. You have to create that environment first of all for the training, where your message should reach to the other person as your message only. Fine. It should not become the you message, and it's important that you should listen to me properly. Are you in the right place, right aura you have created around yourself? So at least you are comfortable listening to me, all of you. Can you just connect me one by one? At least I would like to know that whether they are comfortable. JIT Jaipur, are you listening to me? Yes, sir. Yes, ma'am. Yes. Okay, fine, great. And because now, is it Bikaner? Bikaner? Am I audible to you all? Yes, ma'am. Wonderful. And third one? Um, Great. Jaipur and Bikaner, I welcome both of you for the another part, because yesterday we have started with the techniques of training, and then in that situation we have learned about lecture, about talks. We also learned about demonstration, discussion, role plays, and case studies. So these are various techniques which we discussed yesterday, and there are few leftovers. You can say that is the simulations we have done till simulation, where we have discussed about the example of I had given you example that how the drill had been done or made in Airtel when I was working there. That how air, in case if you want to rescue from fire mishap, then how you have to save yourself from that damage, fine, from that holocaust. So that is what you need to learn, and this is how you can do all these kind of ways, simulations, and all these techniques you can apply, and depending upon the situation. Get Depend. five. Cat 5. अभी quality Okay. Then let's start from the previous one only. I hope that you all were there yesterday also. So there is no need for me to also introduce myself. Anyway, Mrs. Meera Anand. Now I'm just giving you the idea that what we did yesterday and what we are going to cover today and my milestones. Now milestones for today is about the brainstorming, buzz group, question and answers, and reflection. And apart from that, we are also going to talk about training evaluation and its impact. So this is how we are going to conclude this session today. So let's start with the brainstorming method. So till yesterday we discussed about discussion, because that is another technique or a tool which we may use to know about the various thought process. That is a cognitive thought process in your mind. So what is brainstorming? It says a problem-solving exercise that involves a rapid-fire recording of ideas without criticism or ranking is called brainstorming. It means, in case if we have few students or participants and with a particular idea, maybe you have a problem in your college or maybe in your institute of a particular sector, in a particular sector, and then what you can do, you can also sit together and think about that what kind of solution you can give to solve that particular problem. So 4, 5 or maybe 7, 8 participants or aspirants can easily sit together, and then they can discuss about this brainstorming session. It's an effective method for collecting ideas because you have something else. We used to have, in corporates, we used to have something called best practices. And best practices could only be implemented once you have something in your mind. So during brainstorming sessions, generally in case if you find that you have done something in your own workstation, at your own workstation, and it is going very well, then in that situation, what you can do, you can also give that information among the whole group, or maybe you can say to the whole vertical. For example, if I was working with CSD, that is a customer service delivery. So in the morning sessions, we used to meet everyone and we used to discuss about any best practice which we have initiated, which we have created, and then we have to be innovative to implement it. So as you all know, I'm using quite heavy words like creative, invention, and maybe innovative, and we will need to know about all these things. I'll just give you a one-liner for all three.
creativity is something which is very new, which is original, which is unusual, and that is what creativity. It is a tendency to develop something like that, which is unusual and which is, or maybe you can also answer me in case if you are already aware of. Are you aware about? Can you connect me to Jaipur, please? Jaipur, folks, I just wanted to ask you one thing, that what is the basic difference between innovation and creativity and invention? Are these Innovation, innovation, innovation is something new uh, that can not be found in past. that cannot be? फाउंड इन पास्ट एक्चुअली पहले नहीं हुआ है और अभी कुछ नया किया गया है वो एक इनोवेशन इन्वेंशन क्या होती है सर? इन्वेंशन क्या है? व्हाट इज इन्वेंशन? Then you have to tell me about invention, because invention also has not done in the past and you are doing it for the first time. डिस्कवरी ऑफ न्यू थिंग इसका भी मीनिंग सेम है सर? Invention is discovery of new thing. And what about innovation then? It is something old? It is something old. See, everything seems to be very simple and we are discussing here. Let's do brainstorming on this, because we would like to know about, I would not like to go further, because if I'm using certain words like creativity, innovation, or you can say invention, then we need to know the basic difference between three. So if you can give me the basic difference between three, then we can proceed further. Can you connect me, Mona, to Bikaner then, in case till the time if you are understanding? Bikaner, what is the basic difference between innovation, invention and creation? पास्ट Hello. Hello, yes sir, I'm listening to you. Welcome to this brainstorming session now. Let's brainstorm on this. Okay, because I am now going to solve my problem, and for that I need to be very innovative. At the same time, I need to be creative also. And if I am going to be creative, then after that we need to invent something. So what is the basic difference between these three words? हम थोड़ा सा आगे आगे बात करेंगे, मेरे को सुनाई देगा सिस्टम के आगे, because difficult for me to listen you, and then you need to be audible. Yes, madam. Good morning. Good morning. You Is are it very, audible, ma'am? absolutely wonderful. As Yes. if you are sitting in front of me. वैसे भी आप मेरे को सामने नजर आ रहे हो, लेकिन मुझे फिजिकल रूप में नजर आ रहे हो सामने. अच्छा, मैम, इनोवेशन का मतलब ये होता है कि हम पहली बार कोई चीज डेवलप करते हैं, प्रोडक्ट को, जो कस्टमर के सामने आता है. जैसे मैं बात करता हूँ टेलीफोन की, तो एक इनोवेशन था, इन्वेंशन था. इनोवेशन की मैं बात करता हूँ जब फर्दर उसमें डेवलपमेंट होते हैं अकॉर्डिंग टू कस्टमर्स नीड्स. जैसे मैं बात करूँ टेलीफोन से मोबाइल्स आए, मोबाइल से हमारे पास में फिर आईफोन्स आए, तो ये एक इनोवेशन का एग्जाम्पल है. ओके, एंड क्रिएशन, क्रिएटिविटी क्या हुई? Something new. मैम, Something new. Something new finding. क्रिएशन की बात करते हैं. Something new. अरे मैम, टू क्रिएट न्यू समथिंग, आप हमेशा ट्राई करते हैं कुछ नया और कुछ नया और कुछ उसी चीज को कुछ डेवलप नया करने की, तो वो क्रिएटिविटी हो जाती है. तो क्रिएटिविटी इन्वेंशन नहीं है? Feature. It Some is new not feature. invention. Ma'am, some new feature to be added. That is creativity. Multiple users of the same product. No, that is That not. is creativity. It is not Now, invention. say for example, in marketing, we take, say for example, earlier first time when Kurkure was launched, it was launched with only 3 deviants. Then the number of deviants variants were increased. Then they talked about the usability of the product, how you can use this one. Then same thing we did with Monaco also. No, that is That okay. was creativity. They tried to sell the same product with something new. That is Now, creativity. no, creativity, in case if it is like this, of developing something new, that is very right, unusual and original. Anything which you are conceiving, the conception of something new, original
and which is unusual is known as creativity. Is it okay to all of you? I mean to say, मैम कोई एग्जांपल देंगे आप क्रिएटिविटी, इनोवेशन और इन्वेंशन का किसी एक ही प्रोडक्ट लाइन के थ्रू? देखो, अगर मैं आपको बताऊं, अगर मैं क्रिएटिविटी की बात करूं तो क्रिएटिविटी क्या है? कंसेप्शन. कोई आपने चीज कंसीव नई चीज की, बट एट द सेम टाइम इफ यू आर डूइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम, इट मीन्स वंस यू आर एक्चुअली creating something new for that conception, for that creativity, if you are going to give a form or a product of that, that becomes your invention. Because anything which is there in your mind, you have thought about that creativity, you thought about that idea, but once you create it, that is what becomes your invention. And once that invention is being implemented, implementation of the invention is known as innovation. Are you getting me? मैम सॉरी बट ये क्लियर नहीं हुआ अभी तक कि बता दो आपको. क्रिएटिविटी क्या है? कंसेप्शन. इट मींस आपने सिर्फ कंसीव किया है. अभी आपने, अगर आप चाइल्ड को कभी कंसीव करती है मदर, तो उसमें क्या होता है? आपको चाइल्ड नजर थोड़ी ना आता. इट इज ओनली दी स्टार्टिंग बिगिनिंग ऑफ समथिंग अनयूजुअल, समथिंग ओरिजिनल. फाइन. अभी उसको फॉर्म नहीं आया, उसका कोई फॉर्म नहीं बना है. यू नो अबाउट द फंक्शन एंड फॉर्म. आपको पता होता है फंक्शन क्या होता है, फॉर्म क्या होता है किसी चीज का. अगर मैं किसी, फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेना चाहूँ फ्लाई का, फ्लाई FLY इज नथिंग बट अ फॉर्म ऑफ दिस लेटर, फॉर्म ऑफ दिस वर्ड. मतलब स्पेलिंग्स जो होते हैं वो फॉर्म हो गया. और फंक्शन क्या हुआ? इफ आई से द काइट फ्लाइज इन द स्काई, तो इसका फंक्शन क्या हो गया यहाँ पे? दैट इज, इट इज बेसिकली अ वर्ब, जिसे हम लोग बात कर रहे हैं. तो फंक्शन उसका कार्य होता है, और जो नजर आता है देखने में, उसको हम लोग कहते हैं फॉर्म. क्रिएटिविटी में क्या होता है? इट इज जस्ट अ कंसेप्शन, नॉट द फॉर्मेशन ऑफ द थिंग. हम कोई चीज फॉर्म नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ उसको कंसीव कर रहे हैं. हमने सिर्फ अभी सोचा है उसको, थॉट प्रोसेस में. एंड आफ्टर दैट क्रिएटिविटी, इफ आई एम गोइंग टू क्रिएट, अगर मैं सपोज कोई चीज क्रिएट कर रही हूँ, और क्रिएट करने के बाद मैंने इंसाइट, बिकॉज इट गिव्स यू नो मोर टुवर्ड्स insight, it gives more pathway to insight, and that is known as invention. Because then difference between idea and creativity, because idea is something the same, what the conception. आप इसमें तीन चीजें नहीं लेकर आओ. अभी आपने मुझे बोला कि क्रिएटिविटी और इन्वेंशन में क्या फर्क है. इन्वेंशन जो है वो प्रोडक्ट आ जाता है सामने क्रिएट होने के बाद. और अगर जैसे अगर आपने माइंड में कुछ चीज सोची, वो आपने क्रिएट किया, कंसेप्शन ऑफ इट, ओनली कंसीव्ड इट. कंसीव करने के बाद जब आप उस आइडिया को आप क्रिएट करते हो, दैट बिकम्स योर इन्वेंशन. आर यू गेटिंग मी? इफ यू क्रिएट समथिंग नाउ, बट वंस, जैसे आपने कुछ क्रिएट किया, आपने, उन्होंने सोचा कि ऐसे हवा में चीज उड़ सकती है, ये होना चाहिए कि हम एरोप्लेन, जैसे राइट ब्रदर्स ने किया था, तो उन्होंने पहले आइडिया कंसीव किया था, उस कंसेप्शन को कहते हैं. और उसके बाद जब उन्होंने उसको इन्वेंट किया कि इस तरह से प्लेन बनेगा, इस तरह से ग्लाइडर बनेगा, तो क्या हो जाता है? इन्वेंशन हो जाती है. उसको जब हम इम्प्लीमेंट करते हैं, जब हम प्रैक्टिकल यूज में लेकर आते हैं, दैट बिकम्स योर इनोवेशन. Right, ma'am. I'm very clear among the creativity, invention, and innovation, but still there is a doubt between the conception, idea, and creativity. Idea, conception, and creativity. Creativity is a process. मतलब ये प्रोसेस है क्रिएटिविटी, आइडिया और इन्वेंशन के बीच में. क्रिएटिविटी इज अ टेंडेंसी. इट इज बेसिकली अ टेंडेंसी. आप क्रिएट करने की आपकी टेंडेंसी है. फाइन. अब आइडिया जो अब अगर मैं बात करूं, ये आएगा कैसे? आपको आइडिया क्रिएट करोगे कैसे? बिकॉज आपका एटीट्यूड होगा इसके पीछे, टू क्रिएट समथिंग न्यू. अब एटीट्यूड क्या होगा? इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव. एंड एटीट्यूड को क्रिएट करने के लिए देयर आर थ्री बेसिक थिंग्स. वन इज फीलिंग्स, सेकेंड इज थॉट, एंड द थर्ड इज बिहेवियर. अगर हम लोग बात करें एटीट्यूड की, एटीट्यूड के कंपोनेंट्स मेन क्या हैं? अगर आपका एटीट्यूड होगा तभी तो क्रिएट करोगे. अगर आपका आइडिया ही नहीं है कुछ चीज क्रिएट करने का, तो फिर आप एटीट्यूड आप रखते नहीं इस चीज की तरफ, तो आप क्रिएट क्या करोगे? तो इसका मतलब आपके पास फीलिंग्स होनी चाहिए, आपके पास, देन यू हैव थॉट ऑफ डूइंग दिस, एंड देन यू हैव व्हाट, बिकॉज दीज आर ऑल साइकोलॉजिकल टर्म्स, एंड बिहेवियर ऑल्सो. और इन सब में ही आप कुछ, फॉर एग्जाम्पल, आपने पहले सोचा, माइंड में रखा, एक एटीट्यूड आया कि फोक म्यूजिक बहुत अच्छा होता है, फोक म्यूजिक इज रियली गुड, दिस इज व्हाट, एंड ये जो आपके मन में आया, दिस इज व्हाट यू आर फीलिंग, दैट फोक म्यूजिक इज गुड. And second thing is behavior में you thought that yes, now I should start listening to this folk music quite often. That is what you are doing. आप जहाँ पे भी folk music के concert होंगे, जहाँ folk music की वीडियोस, CDs मिलेंगी आपको, आप उस तरफ जाओगे.
एंड लास्ट हम एक्शन की बात जब करते हैं, एक्शन मतलब हम जाके दुकान से खरीद लाएंगे वो फोन। तो पहला हमारे हाथ में दिमाग में क्या आया, पहले फीलिंग्स आई, फीलिंग्स के बाद हमने बिहेव किया उसको सुनने के लिए, एंड तीसरा हमने क्या किया, एक्शन कर लिया। एक्शन क्या किया, हम जाके सीडी खरीद के लेकर आ गए। तो एटीट्यूड होगा तो हमारे अंदर क्रिएटिविटी आएगी, जब क्रिएटिविटी आएगी तो हम कुछ इन्वेंट करेंगे, तो हम इन्वेंट करेंगे तभी तो हम इनोवेट करेंगे, तभी हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। जब हम इम्प्लीमेंट ही नहीं करेंगे तो हमारे पास चीजें आएंगी कैसे? आर यू गेटिंग मी नाउ? Can you just revise it once you go back home and just एक बार जरूर rethink about it, because there are very new words. आज बहुत सारे नए वर्ड सीखे हमने, innovative, invention, creativity. अगर इस बात के ऊपर मैंने ट्रेनिंग ले रही हूँ, मैं ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे हम इसके ऊपर, तो हमारे पास बहुत सारे आइडियाज आएंगे। अगर मेरा एटीट्यूड है कि मुझे कुछ चीज नहीं इन्वेंट करनी है और इन्वेंट करके मुझे इम्प्लीमेंट करनी है, बिकॉज आई एम क्वाइट इनोवेटिव, तो इन दैट सिचुएशन एम्प्लॉइज भी क्या करते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉइज भी ऐसे ही करते हैं। अगर आप कोई चीज इंप्लीमेंट कर रहे हो और उसका रिजल्ट अच्छा आ रहा है मेरे पास, तो देन व्हाट विल आई डू, आई विल स्टार्ट टेकिंग इट एज अ बेस्ट प्रैक्टिस। बेस्ट प्रैक्टिसेस के लिए ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस, एचआर आपको ऑलवेज दे अवार्ड यू, एंड दिस हाउ यू कैन बिकम अ पार्ट ऑफ द हॉल ऑफ द फेम और द वॉल ऑफ द फेम, जहाँ पे आपका फोटोग्राफ लग जाता है, एंड यू आर अप्रेज्ड वेल। एंड दिस हाउ इट हैपेंस। इट यूज्ड टू हैपन विद अस व्हेन आई वाज वर्किंग विद एयरटेल, because I told you my 14 years experience with corporate. So all these things we used to do it ourselves. हम खुद उसको चीजें करते थे, और ये सब चीजें जो मैं बता रही हूँ आपको प्रैक्टिकल है, because we have done it and this is how we have done brainstorming sessions. एक सिंपल रूम में जाके हम लोग, जब भी हमें प्रॉब्लम कहीं आती थी, कस्टमर कोई ऐसा कंप्लेंट लेके आता था जिसकी सोल्यूशन नहीं मिल रहा हमें, which is not there in the policies and the processes, there what we need to do, we used to do brainstorming. Okay, सब आप बताओ, चाहे वो गलत हो, चाहे वो eccentric हो, doesn't matter, but you have to come out with your ideas, you have to do brainstorming, and उसके बाद हम लोग क्या, because इसमें हम लोग, मैंने आपको बताया, without criticism, हम criticize नहीं करेंगे किसी को कि कितना stupid सा idea दिया किसी ने। Why? Because it is just your thought process. If it is your thought process, and then you, maybe other person can take it. Okay, so is this clear to all? Jaipur? Yes, ma'am. And what about Bikaner? यस मैम, थोड़ा थोड़ा हुआ है, थोड़ा मैं इसको एक्सरसाइज करके और देखूंगा मैम। देखना, और maybe you can see the video again and you can just mark my words, you can get back to me also. Yes, yes, sure मैम। Sure. And when should the brainstorming be used? Brainstorming is helpful during planning phase of an activity when we cannot decide what to do. Brainstorming can be used to initiate the idea sharing process. Basically, it is an idea, for that you have to share with everyone. आइडिया भी क्या है, ये भी आपका क्रिएटिविटी है। आपके मन में, ध्यान में कोई चीज आई है, आपको नहीं पता ठीक है कि गलत है, पर आपने अपना आइडिया देना है। ब्रेनस्टॉर्मिंग कैन बी यूज्ड टू स्टिमुलेट क्रिएटिविटी। ब्रेनस्टॉर्मिंग की क्या लेकर आते हैं, तो बता दिया थॉट, और इनोवेशन को बता दिया उसका एग्जीक्यूशन, इम्प्लीमेंटेशन। एब्सोल्युटली ठीक बता रहे हो। इनोवेशन को इम्प्लीमेंटेशन कह रही हूँ मैं, और क्रिएटिविटी को मैं कहती हूँ कंसेप्शन, बिकॉज यू कंसीव। And invention को क्या है, that is the creation of something which you have conceived. That is what invention is all about. Fine, and it also sparks to the insight. I hope everything is so clear. In case if you revise it once again, and maybe things may start, residing you in your mind, because it is there already in my mind, so it is quite easy for me to discuss. But for you to take few new words, it will take time maybe. Brainstorming can be used to stimulate creativity, especially when the fresh approach is needed. When something new is needed, then you have to do brainstorming, because we don't want to get back to the previous work or previous situation, maybe previous task which we have already implemented. We want something afresh, new. Okay. So next is advantages, pros and cons. You can just take a look. Maybe you will find some new words, and maybe you have certain things in your mind, but you cannot give form to that. So all ideas are heard and no one is ignored. All ideas are initially accepted as valid and having equal importance. Maybe possible because if somebody is talking and you are taking a notes of all these things, so in that situation it is very, very important for you to let the idea flow rather than curbing, and rather than usko prevent karne ki bajaye hum log kya karenge, we have to give that idea to develop, to grow, and then we can analyze it well. Okay, so lots of ideas are gathered and patterns may begin to emerge.
और लॉट ऑफ आइडियाज आर गैदर्ड, बहुत सारे जो आइडियाज हैं वो हम गैदर कर लेंगे और उसके बाद हम लोग फिर उसको स्टार्ट करेंगे, कुछ ना कुछ उसमें से निकालेंगे। ड्रॉबैक्स क्या हो सकते हैं? आपको क्या लगता है कि अगर ब्रेनस्टॉर्मिंग होती चली जा रही है और बहुत सारे आइडियाज हम इकट्ठे कर रहे हैं, तो वो जो आइडियाज हम इकट्ठे कर रहे हैं हो सकता है कि वो शायद इतने absurd हो कि वो इतना टाइम ले लें, हम एक ही चीज के ऊपर डिस्कस करते चले जाएं और हमारा टाइम इतना ज्यादा वेस्ट हो जाए उसके ऊपर। सो लेट्स सी व्हाट कैन बी द ड्रॉबैक्स ऑफ दिस टेक्निक ऑफ ट्रेनिंग मेथड। The true value of brainstorming occurs during the follow-up activity. ब्रेनस्टॉर्मिंग हम करते कब हैं? जब हम लेक्चर्स ले लेते हैं। लेक्चर्स, फॉर एग्जांपल कोई ट्रेनर आया, फैसिलिटेटर, he trained, he gave a lecture to you. After giving the lecture, maybe if you are not connecting with the ideas which he or she had given in that situation, what you will do? Then you will definitely going to take it what as maybe a criticism, or maybe you would like to assess that what the other person has said, and then you sit together and then honestly उसके बाद आप इसको फॉलो अप करने की कोशिश करोगे। सबसे पहले बहुत सारी चीजें हो चुकी होती हैं ऑलरेडी, बहुत सारी हम बातें कर चुके होते हैं, उसके बाद हम ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं। अगर हम ब्रेनस्टॉर्मिंग को लास्ट के टाइम में लेकर आते हैं तो बहुत सारे आइडियाज तो पहले से क्रिएट हो चुके हैं। सो व्हाट्स न्यू पीपल विल गोइंग टू हैव टू डिस्कस। लार्ज नंबर ऑफ स्पॉन्टेनियस आइडियाज इज कलेक्टेड। हो सकता है कि हम लोग कुछ मिस कर जाएं रीजनेबल सोल्यूशन के लिए। Fine. So this is how we need to talk about. And here the recorder during the brainstorming session must be careful not to misinterpret or impose bias on any idea that are proposed. Very importantly, because अगर हम brainstorming session में हम कोई चीज ऐसी misinterpret ना कर जाएं, not to be misinterpret, because हम लोग कोई और उसके बाद हम उसके ऊपर biases लगा दें, because you have said something and we have not accepted. And that's why there are many conflicts also that may happen during the time of brainstorming. So brainstorming basically once the like-minded people are there. अगर आपके जैसे थॉट प्रोसेस वाले लोग हैं और वही कुछ बताना चाह रहे हैं, एक ही लेवल के लोग हैं, अगर ऑपरेशनल लेवल है तो सारे ऑपरेशनल लेवल के, अगर मिडिल मैनेजमेंट है तो मिडिल मैनेजमेंट के सारे ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हैं और वो फिर अपने आइडियाज कोलेट करके एंड देन दे कैन कम अप टू द कंक्लूजन एंड देन दे कैन प्रोसीड इट फर्दर टू डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। फाइन, दिस इज हाउ यू कैन जस्ट टेक अ लुक ऑन दिस। नेक्स्ट है बस ग्रुप। अब बस ग्रुप क्या होता है? व्हाट इज अ बस? हम बस नहीं कह रहे हैं, बस है। अगर आप नोटिस करें ये कोई हमारी बस नहीं है जिसमें हम चढ़ के चले जाएंगे। और अगर बस ग्रुप जो होता है बेसिकली ये 3 से 8 पार्टिसिपेंट्स, ओनली 3 to 8 पार्टिसिपेंट्स, नॉट मोर देन दिस। फाइन, फिर वो तो हमारा डिस्कशन शुरू हो जाएगा। डिस्कशन में कम से कम मिनिमम 7 to 12 होने चाहिए, मतलब 7 से लेके 7 तो होने ही चाहिए मिनिमम। ये हम 3 से भी शुरू कर देते हैं। सो यू कैन से दैट डिस्कशन से जो छोटा वाला ग्रुप है वो कौन सा होता है? हमारा बस ग्रुप। छोटे छोटे ग्रुप्स जो बन जाते हैं। When a group is given a short time, बहुत थोड़ा समय दिया जाता है to derive an answer and to the simple questions and problem by recording ideas. हम ideas को record करेंगे। अगर आप यहाँ पे डिफरेंस मुझसे पूछेंगे डिस्कशन के साथ तो वो यही है कि डिस्कशन कंपैरेटिवली बड़ी होती है एंड एट द सेम टाइम वी ऑलवेज हैव अ टॉपिक टू डिस्कस। बस ग्रुप के अंदर क्या है कि जैसे ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस होते हैं उसमें आपका क्या होता है? आउटपुट ऑफ बस ग्रुप needs to be followed up with a further evaluation and analysis. जरूरी नहीं है अब हम ये कहेंगे कि हम लोग बस ग्रुप और ब्रेनस्टॉर्मिंग में क्या फर्क है। सो बस ग्रुप बेसिकली क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इन केस इफ यू टॉक अबाउट व्हाट यू कैन से ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन, ब्रेनस्टॉर्मिंग में क्या होगा that there is some problem and you have to find some innovative ideas to solve that problem. Bus group is something that in case you have already brainstorm करने के बाद आपने कुछ आइडियाज निकाल लिए हैं, अब उन आइडियाज को इम्प्लीमेंट आप करना चाहते हैं कि नहीं, किस तरह से बैठ के करेंगे। सो हाउ वी हैव टू गो, वी हैव टू मेक अ स्ट्रेटेजी काइंड ऑफ अ थिंग इन बस ग्रुप। वेरी स्मॉल, बिकॉज जो सिलेक्टेड पीपल हैं लास्ट में वो क्या करते हैं, बस ग्रुप फॉर्म कर लेते हैं एंड देन दे फाइंड, जैसे हम लोग कहते हैं ना सारा कुछ आइडियाज लेने के बाद हम बजर प्रेस करते हैं, इट मीन्स नाउ इट इज अ फाइनल वर्डिक्ट। सो सिमिलरली जब हम फाइनलाइज करते हैं, स्ट्रेटेजी फॉर्म करते हैं, तो वो हम किसके अंदर आ जाते हैं? बस ग्रुप के अंदर। नंबर 1 डिस्कशन। डिस्कशन के बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने थोड़ी सी ब्रेनस्टॉर्मिंग करी, उस डिस्कशन के बाद हमने क्या निचोड़ निकाला, कंक्लूजन, और उस कंक्लूजन को इम्प्लीमेंट कैसे करना है अब हमने वो हम बस ग्रुप के अंदर देख लेंगे। सो व्हेन शुड बस ग्रुप बी यूज्ड? हम यूज कब करेंगे? व्हेन देयर आर टू मेनी पीपल टू होल्ड ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस।
जब कुछ ज्यादा ही ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस हो जाता है, बढ़ जाता है, बिकॉज एवरीबडी हैव देयर ओन वेज, ऑन थॉट, ऑन फीलिंग्स एंड टू डिस्कस, देन वी हैव अ स्मॉलर बस ग्रुप्स। तो हम लोग क्या करेंगे, अच्छा आप लाइक माइंडेड पीपल है, कोने में एक तरफ चले जाओ, यू कैन से कॉन्ग्रीगेशन ऑफ पीपल। नाउ कॉन्ग्रीगेशन क्या होता है, बेसिकली लाइक माइंडेड पीपल जो एक तरह के ही होते हैं, ग्रुप ऑडियंस होता है। जैसे कि अगर किसी ने मेडिकल इनोवेशन के बारे में बोला ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन में, तो हम मेडिकल ग्रुप को इकट्ठा कोने में कर देंगे, उनका एक अलग से बस ग्रुप बना देंगे। सिमिलरली किसी ने अपनी क्रिएटिविटी दिखाई है, किसी 4-5 लोगों ने इकट्ठे मिलकर ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन में कुछ कस्टमर सर्विसेज के ऊपर, सर्विस एक्सीलेंस के ऊपर अपनी बात कही है, तो उनको हम इकट्ठे 4 लोगों को इकट्ठा कर देंगे। फाइन, दिस इट मींस ब्रेनस्टॉर्मिंग के अंदर भी जब उनको भी आगे हम डिवाइड करना चाहते हैं, देन वी कैन यूज दिस बस ग्रुप्स, दे आर स्मॉलर इन देयर साइज। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, 3 लोगों का भी एक बस ग्रुप बन जाता है, एंड 3 से मैक्सिमम 8 तक, but this is how we proceed further. Anybody wants to ask something? If we can just hold for a second. Is it okay? Yes. Ma'am, please proceed. It is okay, ma'am. Okay. And then we have individuals are reluctant to participate in the large open discussion. कई बार ऐसा भी होता है कि drawback where to be used, जहाँ पे individuals they are not, they are hesitant. They don't want to discuss among the group. इतने बड़े ग्रुप में बात नहीं करना चाहते, बिकॉज आपकी बॉडी लैंग्वेज भी देखना है, उनको बोलना भी है। एंड इफ यू रिमेंबर बर्ट्रैंड रूसल, now Bertrand Russell, he was actually the one who used to give very innovative ideas and very good creative ideas, but at the same time he said that whenever others used to give such creative ideas, people may used to take these ideas as eccentric, कि भैया इसका दिमाग खराब है, कुछ ऐसे वाले आइडियाज दे रहा है। बट डजंट मैटर, वन शुड नॉट बी स्केयर्ड ऑफ सच आइडियाज। हो सकता है कि जो आइडिया आपने वैसे ही ऐसे करके बोल दिया हो, वैसे ही ऐसे करके बोल दिया मतलब कि इसका कोई आप समझते हैं ठीक है, बट दूसरों को नहीं लगता कि ठीक होगा। हो सकता है कि वो उसको एबनॉर्मल समझें कि दिस इज अ सेंट्रिक आइडिया विच डजंट हैव एनी मीनिंग, एंड एबनॉर्मल सा आइडिया वो कल को आपके जाने के बाद, कुछ समय के बाद वही जो है आइडिया आपका प्रिंसिपल बन जाए, लोगों के लिए प्रिंसिपल बन जाए। तो जो लोग ऐसे डरते हैं असेंट्रिक आइडिया, जो इतनी बड़ी डिस्कस बात में नहीं कर सकते, उनके लिए बस ग्रुप बहुत अच्छा रहता है, बिकॉज थोड़े से लोग हैं, 3 लोग हैं, 4 लोग हैं, अगर आपस में डिस्कस करके कुछ बनाना चाहें, दैट इज बेसिकली अ बस ग्रुप। ऐसे सेशंस भी आप दे सकते हैं सीखने के लिए। हो सकता है जैसे कि अगर किसी को मैथ्स में प्रॉब्लम आ रही है, किसी को साइंस में कोई टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है, so in that situation they can make some bus group, teachers may form some bus group, okay, all 4 of you can just think what could be the idea behind this, why this philosopher or maybe why this scientist had made this kind of a thing. So जो लोग 4 लोगों के 4 लोग or maybe 3 people can easily discuss among each other, but it is very difficult for them to gather the courage to speak among the whole group. इतने बड़े ग्रुप में डिस्कस करने में उनको प्रॉब्लम आती है, बट एट द सेम टाइम बस ग्रुप के अंदर भी थोड़ा सा आराम से डिस्कस कर सकते हैं। दिस इज हाउ दे कैन इजीली डू दैट। ओके, ग्रुप्स प्रोज एंड कॉन्स क्या रहेंगे, एडवांटेजेस क्या हैं। बस ग्रुप्स कैन बी असेंबल्ड क्विकली और शॉर्ट नोटिस, यस, बिकॉज 3 लोग ही हैं, 4 लोग ही हैं इकट्ठे, हम जल्दी से असेंबल करके शुरुआत कर सकते हैं बस ग्रुप का। They can participate, they share their leadership and they tend to move a team towards the consensus building. वो बहुत जल्दी आप सोल्यूशन में आ जाते हैं और बहुत जल्दी किसी ना किसी कंक्लूजन में वो लेके आ सकते हैं। ड्रॉबैक्स क्या हो सकते हैं, बिकॉज 2-3 लोग ही हैं, हो सकता है कि कल को अगर उनको कोई मोटिवेट करने वाला ना हो, कोई मेंटोर ना हो उनके लिए, तो वो कहीं बिखर भी सकते हैं, बिकॉज इतना बड़ा ग्रुप नहीं है वो, ओनली दे आर 3 people and all these 3 if they don't have good impact on each other, so this छोटा सा जो ग्रुप है वो जल्दी से डिफॉर्म भी, मतलब वो दैट इज यू कैन से नॉट डिफॉर्म बट यस दे कैन डिसयूनाइट आल्सो। फाइन, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट छोटी छोटी चीजें हमें जो ध्यान देखना, कोई भी छोटा ग्रुप है उसको बिखेरना जल्दी इजी हो जाता है, बट इतने बड़े ग्रुप डिस्कशन में कोई चीज अगर नहीं है तो वो मेजोरिटी क्या करती है, आपको वापस होल्ड बैक कर लेती है। सो ग्रुप और जो हम टीम फॉर्म करते हैं दैट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द बस ग्रुप्स। Pooled ignorance and invalid assumptions and cannot be relied upon to reach viable conclusion. हो सकता है कि अगर सारे ही, सबको ही एक प्रॉब्लम आ गई है लेट्स से मैथ्स में, या सबको ही प्रॉब्लम आ गई किसी टॉपिक साइंस में, उस केस में क्या होगा, उनके पास कभी कोई सोल्यूशन निकलेगा ही नहीं, बिकॉज दे आर लाइक माइंडेड पीपल।
if they are like minded people, so there could be a possibility या तो वो कुछ innovative ideas में खुद आ जाएं, कोई इनिबिशन ना रखते हुए, बिकॉज थोड़े से ग्रुप में कोई आदमी डिस्ट्रैक्ट जल्दी नहीं होता, बिकॉज आपस में बात कर लेंगे वो लोग और शर्म भी नहीं करेंगे आपस में कोई इवन असेंट्रिक आइडिया देने में भी। बट एट द सेम टाइम उनकी इग्नोरेंस भी ज्यादा हो सकती है कि अगर सपोज वो एक ही तरह के लोग हैं और शायद उनको किसी को भी नहीं पता उस चीज के बारे में, तो नया कोई क्रिएटिविटी, कुछ नया कोई यू कैन से आइडिया तो उनको मिलेगा ही नहीं, बिकॉज उनका एक ही तरह का माइंड है, सबका एक ही तरह का इंटेलेक्ट है, हो सकता है सबका एक ही तरह का एक ही लेवल का IQ लेवल हो। To be more effective, bus groups should have experienced leaders and idea recorders to produce accurate and unbiased reports. Okay, so to be most effective, bus groups में क्या है, experienced leaders चाहिए. We need to have experienced leaders. They can easily produce something. They can produce something unbiased reports also. Good moderator needs to be there among that bus group. Then only some outcome will going to come. Fine. So these are the various question and answer method. Another method. So we till now we have learned about. अगर मैं कल से शुरू करूं तो मुझे याद होगा सबसे पहले हमने क्या किया था. If you can just connect me to each or any one of वो ना, हम अगर किसी और के साथ कर दें जिनके साथ हम कभी मिले नहीं अभी एक बार भी. Yeah, Madhav University. If you can just tell me yesterday what all we have done, which techniques we have learned so far. Yesterday. आप बता सकते हैं नंबर 1 पर हमने पहले क्या पढ़ा था, टेक्निक कौन सी पढ़ी थी हमने? यस मैम, हमने कल कौन सी टीचिंग टेक्निक्स पढ़ी थी? कल कौन सी टीचिंग पढ़ी थी हमने? टेक्निक्स नहीं पढ़ी थी कल हमने, बहुत सारी पढ़ी थी हमने, और उसमें लास्ट में ही आ रहा था क्वेश्चन एंड आंसर मेथड. उससे पहले हमने और बहुत सारी पढ़ ली थी. इफ यू कैन जस्ट नेम देम. हम इसको दोबारा से रिकैप कर रहे हैं फटाफट. सॉरी मैम, याद नहीं आप कल कौन सी मैं बता देती हूँ फिर आपको. कल कौन सी हमने पढ़ी थी? जयपुर. Ma'am, we had learned about lectures, discussion, demonstration, role playing, simulation, and budge group, innovation. वेरी गुड. आई थिंक सारा कौन बनेगा करोड़पति में सारा करोड़ रुपया आपको दे दिया जाता है. दे दीजिए मैडम. Wonderful, because you have just done a wonderful job of recapping everything which we have done yesterday, and you still know their names on tips. That's wonderful, and you really made my day, and you really motivated me to proceed further. Thank you so much. And what is a question answer session? Mean facilitator like me, he can ask different question and answers quickly. आपको लगा होगा कितनी spontaneously पूछ लेती है मैम. So these question and answer sessions, ये example ये question and answer session का. If I ask you some question and if you are ready to give answers, and that is the best way to learn. So if अगर मैं ही आपको सारा कल का पूरा बता दूं, so it means we are just revising. But if you are telling, it means from back of your mind you must be remembering, recollecting, recall कर रहे हो और उसके बाद recognize करके आप मुझे बता दें. So question and answer session seems to be quite easy. आप बहुत ज्यादा use करते होंगे students के साथ जब आप बच्चों को questions पूछते हो. Now the questions can be of two types. One can be closed questions or you have a open questions. Open questions, now okay, tell me something about this. If I ask you about tell me something about a particular topic, it is an open-ended question. A student may come up with the different ideas. He may come up with different maybe ideas relating to that particular subject or maybe about that subject only. Fine. So on the other hand, अगर हम लोग closed पूछते हैं questions, closed का मतलब क्या है कि scope कम हो जाता है. Okay, tell me whether it is right or wrong, whether it is good or bad, whether it is high or low. जब मैं उनको एक दो देती हूँ चीजें कि उनमें से ही आपको decide करना है कोई चीज, उसको हम लोग closed questions कहते हैं. So you have two types. One is open-ended questions and second is closed-ended questions. That depends upon the situation. कहाँ पे आप कौन सा question and answer technique use करते हैं. So when an expert provides specific knowledge by responding to direct questions from a group, this is called the question and answer sessions. Question and answer sessions are often conducted at informal events, of course, informally.
आप पूछेंगे in which speaker provided candid responses. Candid means very careful, very nice, very good responses, very efficient and effective responses. प्रेस कॉन्फ्रेंस है, आपको कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप उसका आंसर करोगे. सिमिलरली आप वाइवा लेते हो, आप क्वेश्चन पूछते हो, वो आपको आंसर करते हैं. So these are the basic you can say examples or situations where you use such type of question and answer sessions. When should question and answer be used? Are usually most effective when held near the end of the training course. तो क्वेश्चन आंसर सेशंस कहाँ होता है? जब तभी इफेक्टिव होता है जब हम सारा ट्रेनिंग कोर्स खत्म करने के बाद कुछ पूछा जाए. Or maybe you can also start in the beginning of the session, just to know the expectations of the aspirants. अगर मुझे किसी से expectations पूछनी है कि आप इस ट्रेनिंग में क्या सीखना चाहोगे, again I'm asking you a question and you will going to give me answer. ऐसा भी हो सकता है. और लास्ट में जब पूरा का पूरा ट्रेनिंग कोर्स खत्म हो जाए उसके बाद क्वेश्चन आंसर सेशंस जनरली बहुत इफेक्टिव रहता है, just to know that whether they have understood or not. In situations when the expert is available and willing to participate, question answers can promote open exchange of information. Yes, because कोई ऐसी सिचुएशन में जब एक्सपर्ट अवेलेबल हो और वो पार्टिसिपेट करने में और आंसर्स देने में इफेक्टिव हो, तो वो उससे क्या हमारी एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा हो जाता है. दैट इज व्हाट वी नीड टू. एडवांटेजेस आपने देख लिए, आपको पता है एडवांटेजेस क्या हो जाएंगे. प्रोवाइड इमीडिएट रिस्पॉन्सेज फ्रॉम, बिकॉज हमें इमीडिएट रिस्पॉन्स मिल जाता है एक्सपर्ट से. अगर आपने कुछ क्वेश्चन पूछा, आपने आंसर दिया और मैं उस आंसर को जल्दी से करेक्ट कर लेती हूँ, सो इमीडिएटली यू विल गेट रिस्पॉन्ड टू द क्वेश्चन एंड एज वेल एज द राइट आंसर. देन अलाउ इंटरेक्शन विद एक्सपर्ट माइट अदरवाइज बी इनएक्सेसिबल. हो सकता है कि एक्सपर्ट सिर्फ लेक्चर दे के चले जाएं एंड यू डोंट गेट एन यू कैन से अपॉर्चुनिटी टू इंटरैक्ट विद देम. But with question and answer sessions, you get an opportunity to approach them, to talk to them. अभी अगर मैं suppose आपसे बात कर रही हूँ, इसका मतलब I'm quite approachable to you. You can easily ask questions to me and I can answer you. I'm easily approachable. So if this is a method of interaction, this is a method of training, that in this way there is very less gap, or you can say there is very less hindrance, or you feel quite comfortable and you find trainer quite approachable. Fine. And this is the best way of in the classroom communication also, one of the very good you can say component of classroom communication. Drawbacks क्या क्या रह सकते हैं कि हो सकता है कि expert has no control over the content, topic or the focus of questions. हो सकता है कई बार कि कुछ question answer sessions में उसको नहीं पता कि कौन सा वाला question पूछा है, because if listeners are going to ask you some question and if you are not expert in fulfilling or maybe in explaining their query, then what will happen? फिर इसके बाद क्या होगा? यही होगा कि आपको उसी चीज को elaborate करते चले जाओगे और कितना ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा. हो सकता है कि आपके हाथ से कंट्रोल ही निकल जाए, पूरा का पूरा सेशन आपको कोई फॉर राइड ही ले जाए. Fine. So question answer sessions में expert need to be really expert and dexterous in his job or her job. Okay. And we phrased लिखा है accusatory tone and thereby putting expert in defensive position. अगर suppose कोई question इस तरह से phrase किया जाए कि आप टेस्ट कर रहे हो किसी ट्रेनर को, तो उसका आंसर भी कैसे हो जाएगा? बड़ा डिफेंसिव, बिकॉज then the trainer would like to be defensive. क्या पता आपको पता नहीं है, जनरली हम लोग अपनी फेम बॉडी लैंग्वेज भी ऐसे शो कर देते हैं. इट मे हैपन टू यू एनी पॉइंट ऑफ टाइम जब स्टूडेंट्स आपकी नॉलेज को चेक करते हैं. इफ दे आस्क क्वेश्चंस इन दिस टोन दैट इज एक्यूजेटरी, मतलब एक्यूज कर रहे हैं आपको दोषी ठहरा रहे हैं शायद अंदर से कि आपको नहीं पता. और इस तरह की टोन, बिकॉज यू नो देयर आर वेरियस काइंड ऑफ टोन्स आल्सो इफ यू स्टडी. So if you can just tell me one or two tones, so at least just to confirm that whether you are listening or not. Can you just let me know about various tones? Jaipur? Jaipur is there? Jaipur? Various tones, in case if you can tell me. You must have done so many times communication skills, classroom communication. So what kind of different tones you may find they are there? In case if you can help me out, please. Madam, may I know this answer? Please करके मैडम एक particular. In this situation, you are using which kind of tone? Very assertive tone, because you don't want to test. You are basically asking for questions very genuinely. Another tone could be
हाँ वैसे तो मैम आपने कभी कुछ बताया नहीं, चलो आज ही बता दो। sarcastic, वेरी टोंटिंग वे, ये भी तो टोन हो सकती है, ऐसा भी हो सकता है। आपने कल तक तो मैं दो जितनी बार पूछूंगा कभी बताया नहीं, चलो आज ही बता दो। So if this is kind of the question, if somebody will going to ask, this is a what? Sarcastic tone. Fine. और यू कैन से आपने मैम मैम वो कल बताऊंगा आपको, कल मैं आपने कल ही बताऊंगा आपको, अभी तो नहीं मुझे पता, कुछ कल ही करूंगा। हर एक बात अगर प्रोफेसर या टीचर इस चीज की टोन यूज करता है, इसका मतलब वो कंजेक्चुरल टोन यूज कर रहा है, आपको भावी फ्यूचर के बारे में ही बताता है, करंट के बारे में नहीं बता रहा। यू वांट टू से समथिंग बिकॉज यू हैव कम अहेड, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? बिकॉज आप आज नजर आ रहा है मुझे स्वेटर विद अ लोगो हियर। Yeah. Ma'am, I came just now. You just came right now. That's the reason I said, because yesterday you were there on the front seat. Yes, ma'am. I came. I was late today. Okay. So I was just thinking ऐसे वो पहला वाला जो, because commander in chief with the logo here. So today I was just noticing, I said this person is not there today. I'm here with you now. Thank you so much and welcome to the session, though quite late, but doesn't matter. We have not started with the second part of it. Thank Fine? you, ma'am. And questions could be phrased in the accusatory tone, thereby putting experts in the defensive position. So we are talking, आज हमने buzz group सीखा है, मैम will going to explain you well. मेरे सेशन के बाद बता देंगी, आपके साथ ही बैठी हैं मैम। क्वेश्चन आंसर सेशन, देन उसके बाद आपका नेक्स्ट है, इनके साथ ही बैठी हुई हैं वरना, दैट्स द रीजन आई एम जस्ट टेलिंग देम। एंड नेक्स्ट वन इज बस ग्रुप हमने किया था, हमने फिर उसके बाद ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन बताया है। एंड द नेक्स्ट इज लर्निंग सेंटर मेथड, ये भी है कि आप लर्निंग सेंटर में भेज दो, उनको सिखा दो, दैट कुड बी द अनदर वे, स्टेशन यू कैन से, वर्क स्टेशन और लर्निंग स्टेशन वेयर दे कैन टॉक अबाउट द पर्टिकुलर टॉपिक। अगर हमें कोई एक स्पेसिफिक चीज सीखनी है और उसके जो इक्विपमेंट्स हैं, उसके जो डिवाइसेस हैं, वो उसी स्टेशन में ही अवेलेबल हैं, जैसे लैब्स होती हैं, उनको हम लर्निंग सेंटर मेथड भी कह सकते हैं, बिकॉज वहां पे जाके ही सीखा जा सकता है। सो ये भी एक तरीका है, टेक्निक हमारा ट्रेनिंग देने का। ठीक है, व्हेन शुड लर्निंग सेंटर्स बी यूज्ड, कब हमें यूज करने चाहिए? व्हेन लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम हमें खूब सारी इंफॉर्मेशन देनी, हम मल्टीमीडिया रूम में बच्चों को ले जाते हैं, अगर आपने नोटिस किया होगा स्कूल्स में आजकल, in case if you want to teach something to students, large group of students, there what we can do, we can also take them to multimedia rooms, multimedia centers. These multimedia centers are nothing but learning centers method. Okay, so too large to teach specific topics other than methods, and if it is practical for display to remain in a place for the long time. जब हमें प्रैक्टिकलिटी शो करनी होती है किसी चीज की, थ्योरी पार्ट की, लंबे समय के लिए, तो हमारी लर्निंग सेंटर्स हमें बहुत इफेक्टिव रहते हैं। If it is advantages for participants to visit stations at their own pace, because ये बहुत एडवांटेजेस भी रहता है कि वो अपनी पेस पे ही सीखेंगे वहां पे जाकर। फाइन, ये नहीं है कि कोई एकदम सिखा के चला गया थ्योरी पार्ट, एंड पर उसको जब वो खुद अपने आप करेंगे, सो इट विल बी मोर एडवांटेजेस टू देम। सो इस टाइप में हम लोग लर्निंग सेंटर्स हम लोग यूज करेंगे। आपको मैंने मल्टीमीडिया रूम बता दिया, प्लीज रिलेट मल्टीमीडिया रूम विद दिस काइंड ऑफ थिंग, एंड इट मे हैपन कि आप भी बहुत बार ऐसी जगहों पे गए होंगे। म्यूजिक, कभी जैसे आप म्यूजिक रूम में जाते हैं, हमेशा हमारे, आपने देखा होगा क्लासेस में भी, हम लोग म्यूजिक रूम में जाते थे, कभी म्यूजिक रूम से उठ के सर नहीं आते थे हारमोनियम लेकर। फाइन, दीज आर द लर्निंग सेंटर्स, दीज आर लर्निंग रूम्स वेयर वी हैव टू गो एंड लर्न समथिंग, बिकॉज ऑल इक्विपमेंट, दैट ऑरा, दैट एटमॉस्फेयर, दैट एनवायरमेंट, इट सपोर्ट्स दैट लर्निंग ऑफ द एस्पिरेंट्स। Then advantages क्या रहेंगी? That is, learning centers allow small groups to get closer view with a personalized training, includes lecture, हमें hands on demonstration बहुत सारे अच्छे मिल जाते हैं, और drawbacks भी बहुत सारे हैं, because advanced planning चाहिए बहुत ज्यादा। जब हमें advanced planning नहीं है हमारे हाथ में, हम बड़ा, अगर हमारे पास instruments ही नहीं है, equipments ही नहीं है, और हम सब बच्चों को उठा के ले गए लैब में या मल्टीमीडिया रूम में, तो फिर then there is a problem। अभी देखिए आप सबको मैम ने पहले टेस्टिंग किया होगा कि whether you can connect it to us or not. If you can connect it, the beforehand practice सबने किया होगा, and that is why you are learning something quite comfortably now at your own locations. Fine. So that is what, in case अगर आपकी advanced planning नहीं है, then everything will be a flop show. Fine. So to make it hit, it is very important that we need to have advanced planning. और अगर advanced planning नहीं है, तो learning centers बिल्कुल डाउन हो जाएंगे, it will definitely not going to have that impact. Rotation through learning centers require coordinated time allotment, और टाइम allotment करनी पड़ती है rotation,
बिकॉज अभी मैंने इस ग्रुप को सिखाया, फिर मैंने दूसरे ग्रुप को लेकर आना है, फिर तीसरे ग्रुप को लेकर आना है, टाइम करना पड़ेगा इन सब चीजों को। अगर हमारा इस टाइप से टाइम नहीं करेंगे देन व्हाट विल हैपन, इट विल अगेन गोइंग टू बी अ फेलियर। एंड लर्निंग सेंटर्स ऑफन रिक्वायर एडिशनल स्पेस, आपको एडिशनल स्पेस, सेपरेट रूम की जरूरत होती है, बिकॉज उसमें कोई इंटरफेरेंस ना हो, कोई नॉइज ना हो, जैसे अभी आप कर रहे हो। दीज आर लर्निंग सेंटर्स। आपने पक्का एक रूम बनाया होगा जहां पे आप सब बैठे और उसमें कोई डिस्टर्बेंस ना हो, कोई आपको बुलाने नहीं आए, कोई नॉइज ना हो। सो सच टाइप ऑफ थिंग्स, जो अभी आप जिसमें बैठे हो जिस रूम में, दैट इज नथिंग बट अ लर्निंग सेंटर फॉर यू। फाइन, दैट इज अ राइट एग्जांपल ऑफ दिस टेक्निक। रिफ्लेक्शन मेथड, रिफ्लेक्शन में क्या होता है, दैट इज बेसिकली when the individual respond to the series of questions by collecting their personal feelings and thoughts to form a conclusion, that is called reflection. हम लास्ट में जो फीडबैक लिखते हैं, दैट इज नथिंग बट अ रिफ्लेक्शन। हमने इतनी सारी ट्रेनिंग दे दी और उसके बाद हमने क्या रिफ्लेक्ट किया, आपके बिहेवियर में क्या नजर आया, मुझे आप में चेंज क्या नजर आया। सो इफ दिस चेंजेस, इफ आई एम गोइंग टू इवेल्युएट, दैट इज नथिंग बट रिफ्लेक्शन। फाइन, ये भी एक टेक्निक है ये देखने के लिए कि आपको समझ में आया है कि नहीं। फाइन, अगर आपके बिहेवियर में आपके कुछ चेंजेस आ रहे हैं, आपके बिहेवियर में, आपके थॉट प्रोसेस में, आपके वर्किंग यू कैन से स्टाइल में कुछ चेंज आ रहा है, दैट इज नथिंग बट अ रिफ्लेक्शन। सो रिफ्लेक्शन के थ्रू भी हम लोग किसी को ट्रेन कर सकते हैं। इस लिखा है इन्होंने, टू क्रिएट्स एन एटमॉस्फेयर विद पार्टिसिपेंट्स फील फ्री टू थिंक एंड एक्सप्रेस वट एवर इज देयर ऑन देयर माइंड। Fine. So the most important thing is the reflection, you can say, is a part of feedback. Fine. It is actually checking about all these things. When should the reflection be used? At the end of the training sessions as a means of reviewing and evaluating. मैंने आपको पहले बताया evaluate करने के लिए कि कुछ चेंज भी आया कि नहीं, कुछ बिहेवियर में भी चेंज आया कि नहीं। रिफ्लेक्शन बेसिकली इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द रिएक्शन ऑफ द ट्रेनिंग इवेल्युएशन। ट्रेनिंग इवेल्युएशन के आगे जो हम करने वाले हैं 4 पार्ट होते हैं, उनमें से रिफ्लेक्शन आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा, बिकॉज जो फर्स्ट पार्ट है ट्रेनिंग इवेल्युएशन का, वही रिफ्लेक्शन से पता लग जाता है। हाउ यू आर रिफ्लेक्टिंग, रिफ्लेक्ट करना मतलब कि आपने जो भी चीज एक्सेप्ट करी है उसको रिफ्लेक्ट कैसे किया, हाउ यू हैव शोन दैट थिंग। फाइन, ये शो से पता लग जाएगा। अभी मैंने पूछा आपसे क्वेश्चन कि मुझे कल के सारे पॉइंट्स बताओ, बेसिकली यू आर रिफ्लेक्टिंग। आई एम आस्किंग यू क्वेश्चन बट यू आर एक्चुअली रिफ्लेक्टिंग योर आइडियाज व्हाट यू हैव लर्नड यस्टरडे। Fine. So reflection is also part of training. इससे आपको रिवाइज भी हो गया and that becomes your part and this is how you have learned also. And if you missed out something, maybe I'm going to assist you for all these things. Fine. So this is how we just finish with this training methods, yesterday's part, and थोड़ा सा है हमारा evaluation का part, and we'll just quickly do this. I may not have time, please. कितना? 11:10. Okay, in 20 minutes, we'll try to be, for teaching to be effective, learning must take place. And we'll do this. Learning के बाद हम लोग पहले मेन, अभी मैं आपको उसी में थोड़ा बताना चाहूंगी. I don't know how to just hang out. Okay, next हमारा जो आता है वो है session about training evaluation. So most important thing is that इतना सब मैंने जब ट्रेनिंग दे दी, इतनी सारी टेक्निक्स मैंने यूज कर ली, आपने कितनी सारी टेक्निक्स पढ़ी हैं, आपने इनफैक्ट रिवाइज की है, नथिंग न्यू। एंड जितना भी आपने पढ़ा है, अब इसको हम इवेलुएट करेंगे कि हमें जो चीज सिखाई है वो कैसा। जनरली व्हेन आई गो फॉर वेरियस सेशंस, आई मे आस्क स्टूडेंट्स, एंड हाउ डू यू फील अबाउट दिस सेशन टुवर्ड्स द एंड ऑफ इट, वंस बिफोर गोइंग आउट फ्रॉम द रूम। जैसे जिस भी रूम में बैठे हो अभी आप, और जाने से पहले कुछ ना कुछ हाथ में जरूर लेके जाओ कि आपने क्या इंप्रूव करना है, क्या इंप्लीमेंट करना है आगे के 1 मंथ में, 40 डेज के अंदर, आगे फर्स्ट 40 डेज में आप क्या करने वाले हो। हैव यू अंडरस्टूड समथिंग एंड सेंसिटिविटी, सेंसिटाइज योरसेल्फ, बिकॉज दीज आर सेंसिटाइज्ड सेशन। आपको सिर्फ सेंसिटाइज करने के लिए, बिकॉज नथिंग, अगर कोई एक बार में तो आपका दिमाग खोल के हम सब चीजें नहीं डाल सकते हैं उसके अंदर, पर हम उसको सेंसिटाइज कर सकते हैं, बिकॉज माइंड में सब कुछ है, शायद हम कॉन्शियस एफर्ट नहीं कर रहे हैं उसको यूटिलाइज करने के लिए। फाइन, सो इन दैट सिचुएशन ट्रेनिंग इवेल्युएशन प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। और इवेल्युएट करने के लिए मैं उनसे क्वेश्चन पूछती हूँ कि कैसा लगा। वो कहते हैं मैम सेशन बहुत अच्छा था, फॉर एग्जाम्पल। हमें कोई अच्छा नहीं करना, हमें हाउ प्रोडक्टिव इट इज, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस। सो इसकी प्रोडक्टिविटी है कि नहीं कुछ, इसका मतलब हम इवेल्युएट करेंगे। हम ट्रेनिंग इवेल्युएट करने के लिए, द प्रोसेस ऑफ एग्जामिनिंग अ ट्रेनिंग प्रोग्राम इज कॉल्ड द ट्रेनिंग इवेल्युएशन। जब हम एग्जामिन करते हैं सिस्टमैटिकली क्या करते हैं हम लोग, इट इज अ प्रोसेस ऑफ एग्जामिनिंग दैट अ ट्रेनिंग प्रोग्राम इज कॉल्ड अ ट्रेनिंग इवेल्युएशन। इफ यू नोटिस,
that अगर मैंने सारा टाइम ट्रेनिंग दे दिया आपको, मैंने इवेलुएट ही नहीं किया that how much they have understood, is how they reacted at the time, because again जैसे हम लोग इंटरव्यू के टाइम में भी पहले हमको बताते हैं कि प्री प्रेपरेशन कैसे करनी होती है, during interview how they have to perform, and after interview what are the learnings which they have to carry with themselves. Similarly ट्रेनिंग के टाइम में भी हमें पहले जैसे हमने पहले देखना है ट्रेनिंग, ड्यूरिंग ट्रेनिंग सेशन क्या क्या रिएक्शन होगा उस टाइम. सो अगर मैं किर्क पैट्रिक की एक थ्योरी है कर्क पैट्रिक की, एंड ही यूज्ड टू टेल देयर आर द 4 phases. Can they hear us? Okay. So the process evaluation, आप भी तो evaluate करते हो जब बच्चों को पढ़ाने के बाद उनके एग्जाम्स में evaluation होती है आपकी, पर at the same time जब ट्रेनिंग देने के टाइम में हम लोग कैसे evaluate कर सकते हैं? At the time of giving the training, during training sessions and post training sessions, there are the 2 phases which you need to work. Phase 1, type 1, type 2, or you can say phase 1 and the phase 2. Phase 1 में हम 2 चीजें देखेंगे. एक तो क्या है कि हमारा reaction क्या है. Reaction and learning, they are 2 things which we learn in training evaluation. पहली चीज क्या है हमारा, that is हमारा react कैसा है, लोग कैसे react कर रहे हैं हमारे lecture को, लोग कैसे react कर रहे हैं हमारी talk को. In case if we have given maybe an opportunity for discussion, so then how they are reacting with each other. So during this session, and in case if you are learning all this, then this first phase is known as the reaction during the training process. और उसके बाद second क्या, learning, what all they have learned so far. क्या हमने लर्न किया है अभी तक, क्या वो कुछ सीख भी रहे हैं कि नहीं. अगर मैं आपकी बात करूं तो सबसे पहले आपका रिएक्शन कैसे है, ओफो ट्रेनिंग है, कैसे बोरिंग होगा, बैठना पड़ेगा, यू हैव टू लिसन ओनली. अभी तक तो हम सिर्फ सुनाते चले आ रहे हैं, बिकॉज स्टूडेंट्स को हम ही सुनाते हैं, स्टूडेंट्स सुनते हैं. But this time, as a student, if you have to sit, then don't you think so it's quite boring, because then you have to prepare yourself that, okay, you have to sit there for some time and then you have to listen to somebody for a period of time. So there it is very important that you need to react. आपका reaction जो है वो भी ट्रेनर को पता आना चाहिए कि किस तरह की उनकी reaction था. I remember I've been to HDFC Service Excellence Program once, and first time when I actually started the session, and I asked them about their experience. मैंने उनसे पूछा कि सर आप लोगों का कितने साल का एक्सपीरियंस है इस बैंकिंग सेक्टर में. कोई कह रहे हैं हमारे पास 12 साल का एक्सपीरियंस है, कोई कह रहे हैं हमारे पास 18 साल का एक्सपीरियंस है, किनको 14 साल का एक्सपीरियंस है, किन्हीं को 2 साल का एक्सपीरियंस. So when they have different kind of experiences, they have the different stamina to listen, they have a different motivation level to listen to somebody, and also maybe they cannot focus that much because there must be something going on in their mind of their own activities, day-to-day activities, when they were there in my session. So there, first thing, the reaction to them, reaction if I can just notice about them is like such type of frown. If you can see frown in my eye, मेरी आंखें देख के आप देखते हो, training session, because my manager also told me कि 2 दिन तो तुमने वहां जाके वेस्ट ही करने हैं. तो हमें अगर इस टाइप का हम लोग परसेप्शन लेके चलते हैं और इस टाइप का हम लोग माइंड में आइडिया लेके चलते हैं, थॉट, तो ये रिएक्शन भी हमें नोटिस करना इवैल्यूएशन के टाइम में बहुत जरूरी है. वी हैव टू सी दैट हाउ पार्टिसिपेंट्स रिएक्ट टुवर्ड्स दिस ट्रेनिंग. सिमिलरली आपके स्टूडेंट्स किस तरह से रिएक्ट करते हैं वो भी चीज आपको नोटिस करना पड़ेगा, इवैल्यूएट करनी पड़ेगी. नंबर 2, लर्निंग पार्ट. लर्निंग पार्ट कैसे है? इफ यू रिमेम्बर, आप लर्न कितना किया आपने इन दिनों में. अगर आपको कोई 1 घंटा बैठ के पढ़ाया जा रहा है, यहाँ आपको 2 घंटे बैठ के पढ़ाया जा रहा है, कुछ आप सुन रहे हैं, तो कुछ आपने सीखा भी है कि नहीं. इफ यू हैव लर्न समथिंग न्यू, समथिंग इज वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू सेट. ओके, सो इफ यू कैन जस्ट कनेक्ट, आई वुड लाइक टू सी हाउ देयर रिएक्शन इज. सो आर यू लिसनिंग टू मी? Bikaner? Yes, ma'am. Okay, that's wonderful. And what about Jaipur? Yes, ma'am. And another JI, what is that? Madhav University? Yes, ma'am. Yes, ma'am. आपके यहाँ पे एक चले गए थे, इधर एक और भी थे, हाँ? आप है ही नहीं थे, कुछ आप नजर नहीं आ रहा है मुझे. अब मैं आपसे पूछने वाली हूँ, इस बार आप थोड़ा सतर्क रहें, बिकॉज आप सिर्फ 3 लोग ही हैं इस टाइम, आई थिंक, और बाकी एक 4th भी था, वो चला गया मेरे ख्याल से.
Sorry, but we can't hear you. You can't hear me. How can you sit for so long? Am I audible to you? क्या आप मेरे को सुन सकते हैं? No, ma'am, we can't hear you. आवाज नहीं आ रही आपकी. कैसे होगा? मैम आवाज क्लियर नहीं है आपकी. आवाज क्लियर नहीं है तो फिर आप मुझे इधर बैठ के सुन कैसे रहे हो? ये सही क्वेश्चन था. बिकॉज आप इतनी देर से बैठ के सुन रहे हो, आपको मेरी आवाज ही क्लियर नहीं है, देन आई थिंक तो फिर आप मतलब एक किस्म का सिर्फ दर्शन करने आए हो गुरु माँ के, ऐसे तो नहीं हो सकता कुछ. ये तो फिर मैं ऐसा कुछ सत्संग नहीं दे रही हूँ जहाँ पे आप सिर्फ दर्शन करने आए, आप मेरे को सुन नहीं रहे हैं, तो फायदा क्या मुझे सुनाने का? कल से ऐसे कर रहे हैं. ओके, इट इज अमेजिंग. आई एम रियली, एक तो मेरा मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं बोल किसके साथ रही हूँ फिर. JIT. ओके, फर्स्ट वन इज वी टॉक्ड अबाउट, हमने जो पहला फेज में बात की है रिएक्शन, एंड द सेकंड वन वी वर टॉकिंग अबाउट इज व्हाट यू आर लर्निंग, व्हाट ऑल यू हैव लर्नड. फाइन. सो ट्रेनिंग इवैल्यूएशन के जो 4 फेजेस हैं, जिनमें से 2 फर्स्ट फेज कहलाते हैं और सेकंड वाले जो हैं 2 वो सेकंड फेज कहलाते हैं. और पहले फेज में मैंने आपको जैसे 2 बताया, मैं कितनी बार रिपीट कर रही हूँ. वन इज हम रिएक्शन चेक करेंगे एंड सेकंड इज हम लर्निंग चेक करेंगे, कितना लर्न कर रहे हैं पार्टिसिपेंट्स. थर्ड जो हमारी बात आती है वो कौन सी आती है? विल टॉक अबाउट दैट इज अ बिहेवियर. क्या उनका बिहेवियर में कुछ चेंज आया है? बिकॉज जब वो लर्न करके गए हैं तो उनके पास उनके कुछ चेंजेस आने चाहिए उनके वर्क स्टाइल में, उनके वर्क स्टेशन पे जाके उनके काम करने के ढंग में बदलाव आना चाहिए. सो दैट शुड ऑल्सो बी देयर. तो ये क्या हो जाएगा हमारा? दैट इज बिहेवियर पार्ट. एंड द लास्ट वन इज व्हाट? दैट इज अ recommendation, or you can say what result you will going to get. हमने लास्ट में हमने क्या किया? हमने फिर रेकमेंड क्या किया कि हमें किस तरह से हम आगे करेंगे कि नहीं करेंगे, whether we will start responding towards this or not. हमने जो चेंज लेकर आए हैं बिहेवियर में, हम चेंज करने के बाद हम कुछ रिजल्ट, हमने कुछ रिस्पॉन्ड भी किया है कि नहीं. दैट इज द लास्ट, यू कैन से फर्स्ट इज रिएक्शन, सेकेंड इज लर्निंग, एंड द थर्ड इज व्हाट बिहेवियर, एंड फोर्थ इज व्हाट रिस्पॉन्स. फिर हम लोग रिस्पॉन्स में वैसे ही देते हैं. दिस इज व्हाट वी टॉक अबाउट. लेट्स सी हमें इसके अंदर कौन सा पॉइंट्स आता है. आपको समझ में आ गया इवैल्यूएशन क्यों जरूरत है? क्योंकि आप खुद बहुत बार इवैल्यूएट करते आए हो बच्चों को, स्टूडेंट्स को. पर्पस क्या रहेगा हमारा? फीडबैक. यू वुड लाइक टू गेट अ फीडबैक, करेक्ट फीडबैक. हमें आनी चाहिए हमें फीडबैक कि किस तरह से हमारे ऑब्जेक्टिव्स अचीव हुए कि नहीं. एंड लर्निंग, लिंकिंग टू द लर्निंग आउटकम्स. जो हमारी एक्सपेक्टेशंस थी उनको उतनी समझ में आया कि नहीं. सो दैट इज फीडबैक इज वेरी इंपॉर्टेंट. इट इज अ मेन पर्पस ऑफ ट्रेनिंग इवैल्यूएशन, टू गेट द फीडबैक. नेक्स्ट इज रिसर्च. अब अगर हमें ये नजर आ जाए कि हमें ऐसे वाले ट्रेनिंग प्रोग्राम बहुत इफेक्टिव रहेंगे, हम इस पर रिसर्च करेंगे कि लास्ट टाइम ये वाली चीज थी, बट नाउ आफ्टर ट्रेनिंग दिस इज अ चेंज विच वी आर फाइंडिंग इन द स्टाफ मेंबर्स. दे आर मोर नॉलेजेबल. maybe we have kindled the fire. हमने सिर्फ एक चिंगारी जगा दी सबके अंदर कि यस, क्योंकि यहाँ बैठे बैठे तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम आपको सिर्फ ये बता सकते हैं कि सच टाइप ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स यू कैन ऑल्सो होल्ड फॉर योर स्टूडेंट्स टू मेक इट क्वाइट इफेक्टिव. ओके, सो ट्रांसफर ऑफ नॉलेज एट द एंड ट्रेनिंग, इसके लिए हम लोग रिसर्च करने के लिए भी हमारे लिए बहुत इफेक्टिव हो जाएगा. हम आगे भी देखेंगे कि कहाँ कहाँ ट्रेनिंग के बाद हमें क्या क्या फायदा हो रहा है उस चीज का. नेक्स्ट है पर्पस ऑफ ट्रेनिंग इवैल्यूएशन क्या हो जाएगा? वन इज फीडबैक, पता लग जाएगी हमें. उसी फीडबैक से क्या रिसर्च हमें पता, हम उससे रिसर्च भी करेंगे कि आगे हमें कौन से ट्रेनिंग प्रोग्राम्स रखने चाहिए. एंड थर्ड इज इंटरवीन. जहां पे हमें लगता है कि कोई चीज ठीक नहीं हो रही है, हम उसको इंटरवीन करके करेक्ट कर सकते हैं. फाइन, वी कैन इजिली पुट आवर स्टेप देयर एंड टू मेक थिंग्स करेक्ट, टू करेक्ट द थिंग्स, और मे बी टू मेक सिचुएशंस क्वाइट प्रोडक्टिव. सो कोई भी चीज जो कि प्रोडक्टिव नहीं है इस टाइम पे, हम उसको प्रोडक्टिव लाने के लिए भी क्या कर सकते हैं? ट्रेनिंग दे सकते हैं. और ट्रेनिंग को इवैल्यूएट करके हमें पता लग जाएगा, बिकॉज मैंने बोला था लास्ट में बिहेवियर, हम बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल एंड बिहेवियर एट वर्क स्टेशन, मतलब वहां पे रिस्पॉन्ड कैसे कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन में, इंस्टीट्यूट में बाद में बिहेव कैसे कर रहे हैं, बहुत फर्क पड़ता है. बिकॉज वही मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ. जैसे कि आई रिमेम्बर आई टुक वन सेशन विद मर्सिडीज. जब उनके साथ सेशंस लिए थे मैंने फॉर 1.5 months, एंड आई रिमेम्बर व्हेन आई टॉट टेक्नीशियंस अबाउट स्मॉल निटी-ग्रिटीज कि उनको ये बताया कि टेक्निकल मैनुअल कैसे पढ़ा जाता है. बिकॉज मर्सिडीज का जो प्रोड्यूसर है वो जर्मनी है
और जर्मनी से जब उनके मैनुअल्स आते हैं उनको अंग्रेजी नहीं पढ़ना आता, और अंग्रेजी के अंदर तो बिकॉज दे आर जस्ट 8th पास और 10th पास. But the only thing is, one automobile company, they are spending a lot on grooming their employees. वो क्यों ट्रेन कर रहे हैं उनको, कि उनको लगा कि वो चेंज आएगा उनके अंदर. एंड यस, दिस टाइम आफ्टर 6 months when I had gone back there, I have noticed there is a tremendous change in them, because they have cleared their exams after learning English for 1.5 months, and they cleared their exams, and some of them have also now going to Germany to learn something more. अब आप सोच सकते हो कि एक टेक्नीशियन जो कि सिर्फ 8th और 10th पास है, उसके अंदर ये करेज आ गया, वो इतना ग्रूम हो गया ट्रेनिंग के बाद, ही गैदर्ड दैट कॉन्फिडेंस ऑफ रीडिंग न्यूज़पेपर, इंग्लिश न्यूज़पेपर. जो आदमी इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर देता है आपस में, तो आप बोलो देयर इज अ चेंज. एंड वी एक्चुअली, मैं उनके साथ बैठ के फिजिकली उनको इंग्लिश नहीं पढ़ा रही हूँ अब, ना मैं उनके साथ बैठ के पेपर पढ़ती हूँ. बट यस, अगर एक बार आप चिंगारी कहीं लगा देते हो किसी के कि यस इट इज इंपॉर्टेंट फॉर देम, एंड दे विल डेफिनेटली स्टार्ट वर्किंग टुवर्ड्स इट. एंड यू नेवर नो वेयर यू आर इंस्पायरिंग पीपल एंड यू आर कन्विंसिंग देम टू डू समथिंग गुड. फाइन. सो इंटरवेंशन प्लेज वेरी, बिकॉज यू हैव टू इंटरवीन इन द डे टू डे लाइफ. उनको कैसे इंटरवीन किया गया कि आप रुको, मैं आपको बताती हूँ कि मैनुअल कैसे पढ़ना है, और मैनुअल जिस तरह से हम पढ़ेंगे उसी तरीके से हम लोग जो एस क्लास कस्टमर्स होंगे उनको हेल्प कैसे करेंगे. बिकॉज एस क्लास गाड़ी जो है वहां की मर्सिडीज की, वही 3 करोड़ की है. अगर 3-4 करोड़ की गाड़ी है तो ऑफ कोर्स द कस्टमर्स विल बी वेल knowledgeable maybe, and sometimes they are NRIs, and for them they need to understand English very well. So for them to groom to that level where they can interact with NRIs, so it is very important to intervene and in their day-to-day life. So are they still connected to me, Monica? No? गए? फिर तो अब नहीं होगा. Okay, can you hear me? Next is control. Can they see me or no? There is no power. Okay, control is another one. It helps in controlling the training program. Sir, am I audible? Yes, ma'am. Wonderful. Because the power just goes up. That's the reason we have taken few seconds off. Control is, it helps in controlling the training program also, because if training is not effective, then it can be dealt with accordingly. हम control भी पता लग जाता है हमारा, because evaluation से हमें पता लग जाएगा कि कहाँ पे हम गलत जा रहे हैं और कहाँ पे हमें impact और अच्छा लेकर आना. So there we can easily control our training sessions with the evaluation. And after evaluation, the best part is that there is no biases of authoritative employees. हो सकता है कि कोई मैनेजर जो है, कोई प्रिंसिपल, मे बी दे हैव अ बायस्ड ओपिनियन ऑफ सम टीचर, और मे बी जो हायर लेवल पे हैं ऑर्गेनाइजेशंस में, मे बी मैनेजर्स हैव डिफरेंट ओपिनियटेड opinions for opinionated perception, or maybe some communication with some of the employees. But with training program, may be possible that the top management uses the evaluative data, जो हम data evaluate किया है, because जो trainees आए होंगे पढ़ करने के लिए, उनका जो data जब जाएगा उनके पास, managers के पास, that this is what they have learned, this is what they have scored during the training session. So in that situation, maybe they will change the perception of those employees. हो सकता है कि आपके प्रिंसिपल जब आपको किसी जगह ट्रेनिंग पे भेजते हैं और आपके कुछ मार्क्स जो हैं, आपकी जो फीडबैक है, जो ट्रेनर आपके प्रिंसिपल को वापस पहुंचाते हैं, तो उस केस में क्या हो जाएगा, उनका भी परसेप्शन बदल जाएगा आपके लिए. सो द पावर गेम, इट इज नॉट ओनली बिकॉज देन देयर विल बी नो पावर गेम एज सच. ऐसी कोई पावर गेम नहीं होगी कि किसी को डेजिग्नेशन के अकॉर्डिंगली प्रेफरेंस मिलेगी, उनके नॉलेज के ऊपर और उनके चेंजेस के ऊपर, उनके बिहेवियर के ऊपर भी उनकी अप्रेजल अच्छा हो सकता है. इंटरवेंशन, ये तो मैंने बता दिया आपको कि जहां जहां गड़बड़ होगी वहां हम इंटरवीन करके हम उसको करेक्ट भी कर लेंगे थ्रू दिस इवैल्यूएशन. सो दे आर बेसिक थिंग्स. हम अगर आप नोटिस करो, ये हम याद रखेंगे इस साइकिल को. पर्पस ऑफ ट्रेनिंग इवैल्यूएशन इज टू गेट फीडबैक, टू नॉट अलाउ पावर गेम्स टू हैपन, and we have a full control and over the training sessions, the contents of training sessions also, and the delivery of training sessions. Research करने में बहुत काम आता है, and also we can intervene and correct the problems if we have any. Next, process of training evaluation before training. मैंने आपको बता दिया, before training we have to see
that whether learner skills and knowledge, उसकी learner की skill कैसे है, उसकी knowledge कैसे है, whether he or she is comfortable and before the training program. During the start of training, candidates generally perceive as wastage of resource. मैंने जैसे आपको पहले बताया, आने से पहले I don't know still also what you are thinking, but कहीं भी मैं students को भी ये बताती हूँ, every time when you hear something from somebody, everybody has their own perspective. So try to gain, don't be judgmental, and try to gain one of few things, and from that person, maybe he or she, so there you can implement it in case if it is new for you, and if it's just a repetition, again it's good for you, maybe you are not doing it consciously. So it is actually a sensitization program, and that's the reason training programs हम लोग refresher programs भी करते हैं. Refresher programs कैसे हैं, जो चीज हम पहले से कर चुके हैं उसको सिर्फ फ्रेश करने के लिए, कि जो हमें भूल चुके होंगे, शायद हमारे सबकॉन्शियस माइंड में होंगे. नेक्स्ट, ड्यूरिंग ट्रेनिंग, इट इज अ फेज एट विच, मैंने आपको बताया ड्यूरिंग ट्रेनिंग हम दो चीजों के बारे में नोटिस करते हैं. वन इज रिएक्शन एंड सेकंड इज लर्निंग. कितना आप सीख रहे हो और कितना आप कैसे रिएक्ट कर रहे हो, ये भी हम इवेल्युएशन के थ्रू, मैं सब बता चुकी हूँ आपको, जस्ट रिविजन ऑफ इट. एंड आफ्टर ट्रेनिंग मैंने आपको बताया कि वो जो स्किल्स हमने सीखे हैं ट्रेनिंग में, लर्निंग जो हमने ली है हमने ड्यूरिंग ट्रेनिंग सेशंस, और उनको बाद में हम इम्प्लीमेंट कैसे कर रहे हैं. सो योर बिहेवियर प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल. सो हमने जो सेकंड वाले, जो फर्स्ट फेज में हमने दो चीज रिएक्शन और लर्निंग किया था, तीसरे में आपका आ जाएगा बिहेवियर एंड देन रिस्पॉन्स. फिर आपका रिस्पॉन्स किस तरह से बदल गया बाकी लोगों के साथ, आपका बिहेवियर कैसे बदल गया, दिस हाउ यू नीड टू लर्न समथिंग मोर अबाउट इट. ओके, सो टेक्निक्स कौन से रहेंगी इवैल्यूएशन की? वन इज दैट इज ऑब्जर्वेशन, and various methods of training evaluations are observation. अब observation कैसे रहेंगे? That is a questionnaire. Let me just see. I hope I'm not taking too much of your time. Okay, still we have 3 minutes to go, and we can easily only one slide to go more. Fine. So be alert. On the last slide, maybe you will get 1 or 2 lines out of it. Observation, and then a questionnaire, interview, because somebody is there, and that's the reason I just need to wish. So don't worry about the distractions. ऑब्जर्वेशन, यस, हम ऑब्जर्व करके इवेल्युएट कर सकते हैं उनको कि किस तरह से वो लोग सीख रहे हैं. देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी दैट यू वोंट इवन कम टू नो, जैसे हम बिग बॉस में आप देखते हो किस तरह से वो ऑब्जर्व करते रहते हैं उनके बिहेवियर. सो इस तरह से जब हम ट्रेनिंग भी देते हैं तो ट्रेनर क्या करता है, वो ऑब्जर्व करता है. एक ये तरीका है इवेल्युएट करने का. नंबर 2, हम कोई क्वेश्चन दे देंगे एंड ऑफ द सेशन, और फिर जो क्वेश्चंस में से मैंने अभी आपसे पूछा, कल मैंने क्या सिखाया, तो यू हैव गिवन मी आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस. Fine. Next we have interview. Interview is another, we can go 1-to-1 basis. हम 1-to-1 basis में भी हम पूछ सकते हैं उनसे कि देखिए कि आपको समझ में आया कि नहीं, मैंने क्वेश्चन पूछा, आपने आंसर दिया मुझे. सेल्फ डायरीज, मे बी यू कैन राइट इट डाउन ऑल्सो, एंड दैट डायरीज कैन ऑल्सो हेल्प टू नो दैट हाउ मच दे हैव अंडरस्टूड. अगर आपको लास्ट में क्वेश्चन के आंसर्स दिए जाएंगे और आपको बोला जाएगा कि आपने एक डायरी मेंटेन करो, what all you have understood in the training program, and after that we read your self diaries, this will also going to tell that how much you have learned. This is also part of evaluation. And self recording of specific incidents, in case if you have understood something, और last में appraisal form के अंदर भी होता है what all we have learned so far. पहले आप खुद बताएंगे कि आपने क्या सीखा, because generally corporates में you have appraisal towards the end of, you have pre-appraisals after 6 months, and you have complete appraisals that is after 1 year. And during the appraisal time, and it is always there, that self-recording generally helps. So this is all about the various methods of training evaluation, and this is what, why should we have, और outcomes क्या रहेंगे हमारे training programs के. Cognitive outcomes. Cognitive means हमारा behavior change हो जाएगा, हमारे we start feeling in a different way, and we start acting in a different way. So हमारा जो cognitive process है, that could only be possible, and we'll come to know that what are the changes you will going to find. And then कुछ हमारे skills भी बढ़ सकते हैं. कोई चीजें हम लोग जो नहीं करते आ रहे थे, शायद हमने वो चीज skill हमने training part में सीख ली, and we will going to, because it happens. कोई भी कंपनी जब कोई नई चीज इंस्टॉल करती है, फॉर एग्जाम्पल इफ वी हैव समथिंग लाइक, am I audible and can this thing? Okay. Skill based outcomes assess the levels of technical or the motor skills.
हमारे मोटर स्किल्स और अच्छी तरह से डेवलप हो जाएंगे एंड टेक्निकल स्किल्स हमारे बहुत अच्छी तरह से डेवलप हो जाएंगे और ये सारे के सारे आउटकम है किस चीज के ट्रेनिंग के and there are so many training sessions which I attended during my tenure in corporates and I must tell you they have really improved me and they have really instilled that confidence in me today which I'm talking in front of you. I remember corporate theater, and that was by one of the very good corporate person, and he had come and he actually told us to be in our night wears. आप अपने नाइट सूट्स में आना कंफर्टेबल अपने ट्रैक सूट्स में आना और उसके बाद उन्होंने हमें ट्रेनिंग दिया सो दैट काइंड ऑफ कल्चर ट्रेनिंग कल्चर ऑल्सो इंस्टिल्ड that it is not only that you only when you are formally dressed then you can behave formally but also apart from the attire in case if you go there with total relaxed mind maybe you can behave you can share you can act very nicely and very confidently so all these things which you learn at the time of training and this is definitely going to have good outcomes cognitive mind wise also and your motor skills skill wise also and effective outcomes रहता है आपका results अच्छे रहते हैं and ROI most important thing is ROI that is a return on investment कितना हमने इन्वेस्ट किया ट्रेनिंग में कितने हमने पैसे खर्च किए हमने ट्रेनर को भी दिया पैसा हमने टाइम भी स्पेंड किया हमने पैसा भी लगाया और उसका आउटकम हमें क्या निकला दैट इज रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट वी आर इन्वेस्टिंग सो मेनी थिंग्स एफर्ट्स टाइम एंड मनी एंड व्हाट वी आर गेटिंग आउट ऑफ इट सो ROI का फॉर्मूला क्या रहेगा टोटल बेनिफिट्स एंड माइनस व्हाट टोटल हमारा क्या रहेंगे एक्सपेक्टेशंस टोटल कॉस्ट so total benefits minus total cost divided by total cost into 100 so this is a formula in case if you want me to repeat it once again I can say total benefits हमें क्या मिले minus total cost हमने कितना cost incur किया इस training को करने के लिए divided by again total cost and multiply by 100 that is the ROI percentage fine this we need to calculate and I think with this I've already डायरेक्ट कॉस्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट एंड द बेनिफिट्स ये सब कुछ हम लोग इनको सब कुछ करने के लिए ऑफ कोर्स वी नीड मोर टाइम बट just to tell you just to give you some points maybe you can explore this more and all these things on net and you can gain more information but this is just a pointer to you to your knowledge that you should also know about all these things when you talk about evaluation so सब कुछ हमें पता होना चाहिए So whether outcomes are good or not, relevant है कि नहीं, important है कि नहीं, reliable है कि नहीं, reliable का मतलब यही same training program अगर कुछ दूसरे ग्रुप को दिया जाए, same वैसे ही result मिलेंगे कि नहीं, that is known as a reliability. And discriminative. What is discriminative? Discriminative when you actually behave. Because जब आप prejudiced हो जाते हो और उसके बाद फिर आप discriminate करना शुरू कर देते हो, अपने action में वो changes लेकर आना चाहते हो. जब वो actions में जब इतना training लेने के बाद जब आप discriminate when you really make changes in your action in your behavior that is known as the good training outcome discrimination is basically action practicality and practical एक और आ गया discrimination में हम बोलेंगे action of your behavior and practical is the skills which you have to show this is all about ये सारे के सारे जो मैं आपको slides बता रही हूँ reliability discrimination and practicality इसी का मैंने आपको पूरा समझाया वही है there's nothing new and this is all about the training evaluation Thank you so much for being because I cannot see you here because of the light electricity problem. I am only talking and it's difficult for me to look at you side by side. I'm just expecting and I'm just hoping that you must have gained something out of these 2 days. And thank you so much. And in case if you want me to connect one by one, I can ask them about the feedback or maybe I can ask them in case if they want to ask me anything. It's all about yeah. Can we start? Bikaner, in case if you would like to know something. U20. Okay. Bikaner. Anything more you would like to ask me about it? Or you will going to take these pointers and go back to Google Baba और उनको पूछोगे कि सारे इनके It's okay, ma'am. Thank you. It was very useful and good.
And just It was very interactive and productive session, but I have little bit doubt again. The creativity, idea generation, innovation, and invention. I will definitely go to the Google Baba. Yes. गूगल बाबा की बजाय आप इधर भी कभी आ सकते हैं. And in case if I get an opportunity to be there in Bikaner, and Sure. definitely I would like to just have some more interactions and more Sure. interactions. Sure, ma'am. Sure. So much Thank you. Thanks a lot, ma'am. all right. Let me just connect to Jaipur. Yes, ma'am. How to? Then मैं आ गई हूँ. I just have come, but the only V22. Jaipur. Yes, ma'am. Anything which you would like to add? Thank you so much for your participation. Not audible. Yes, ma'am. It was very nice lecture. We are not hearing properly. I've got मेरे को सुना ही नहीं दे रहा. I could not even receive you very well. You are not very audible to me. Madhav, this is Madhav. yes, ma'am. Yes, ma'am. Madhav University. Wonderful to see you here. And आपसे थोड़ा interaction आज मेरा कम हुआ है. जी ma'am. In fact, I wish that at least you would have interacted because मेरे को आपकी शक्ल भी नजर नहीं आई इतने टाइम में. सच्ची बताऊं. Thank you. मैंने Thank you. आपको अभी देखा है आपको अच्छी तरह से कि that at least you have come now. Anyhow, but I hope that there are few things which we have learned altogether. मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला. And I wish that in case if you have more queries and questions, you may ask me also, and maybe sir can easily has all the details about me, my telephone number, my email address. You may ask me, and maybe you can share also something new which you have learned so far. Thank you so much, sir. Anything you would like to say? No, ma'am. Okay, thank you. Mona, then you. Jaipur. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Thank you very much, ma'am. I just want to. Yeah, that's very nice. Good, informative and useful. We had learned so many words and It was very fruitful lecture, you want to say, and we want to see you here again in NEET Chandigarh by our next. All of you for that and wonderful. And because my forte is also how to appear for an interview and for group discussion. So in case if you get an opportunity to come down to Chandigarh, Yes. please connect to me, and definitely most of the time I visit NITR on these occasions. We'll be having some next programs by NEET Chandigarh. So So they will definitely going to inform you about the next lectures. Fine. Okay. And thank you so much for being so patient. Okay. And all the very best, and have a good day. thank you.